Machephy Eduworld. Good afternoon, everyone. We'll continue the previous topic of Newton's law of motion, and we're going to. सर Yeah. आपने प्रीवियस लेक्चर का कहीं वीडियो शेयर किया है क्या? Previous lecture, I have not edited it yet, but I'll share it to you after this class. ओके सर, कहाँ? I'll upload it on Drive and share on WhatsApp. ओके सर. Yeah. All right. So we have a block here, and this block has an angle theta, and the mass of this block is capital F. And what we have on this is another block, and the smaller block has mass of small m. This is of course kept on the ground, and the ground is frictionless. If the ground is frictionless, one thing you can imagine to happen, ground is frictionless as well as all the surfaces are frictionless. So this will try to slide down. When it slides down, it applies some force on the bigger block. So the smaller block will move down the incline, while the bigger block will be moving in the backward direction. Right? So what I want you to calculate is the acceleration of each block. Find acceleration of each block. The thing is that if you look at this smaller block from the bigger block, the smaller block is just sliding down, and the bigger block is going in the leftward direction. So it is not just going in the downward direction. You can say it has two acceleration, one in the forward direction, you can say, and one component in the downward direction. It is not just going down the incline. So draw the FPD and try to figure out what will be the acceleration of each block. Let me call this acceleration as A1 of the bigger block, and acceleration of smaller mass is A2. Pseudo force might be helpful here. So let's try your way out for this question. First thing you will do is draw the free body diagram of both the blocks, and then see what are the net forces. First, we're going to start with the free body diagram of these two. So on this block, mg will be acting downward. Normal force applied by the ground, call it N1. That will be upward. And this block will apply some force on this surface. Call it N2. And it will be perpendicular to the surface. So this one component of N2 will be causing the acceleration. And we know that it can't go downward. So it will have acceleration in the backward direction. That is, call it A1.
And now we can solve this. I can take the component of normal force N2. So if this angle is theta, then this angle is theta. That means this angle is theta. So I can take component in two directions. This is theta, so this will be theta. So on the downward direction, I have N2 cos theta, and here I have N2 sin theta. Similarly, draw the free body diagram of this smaller block. For the smaller block, if I draw the FPD, so block में smaller block ने bigger block पे N2 लगाया. So bigger block will also apply force of N2, and then there is another force, that is small h. So एक जगह contact है and दूसरा is this. So इन दोनों की वजह से there will be a net force. अच्छा, so this here will be responsible for acceleration too. So one thing is clear, इन दोनों का resultant ले लिया, then I can find the value of acceleration. So let us say we can figure out what will be the value of N2. The acceleration का direction ना तो horizontal होगा ना below ना along the incline होगा. It will be in some other direction. So let us take component. This angle. See this vertical wala, this wala angle is theta. This angle is theta. So this angle will be theta. If I take component of N2, I will get N2 cos theta in the upward direction and N2 sin theta in the horizontal direction. But the block is also going downwards. So let us say there are two components of acceleration. One is A2 in the downward direction. Let me call it as A2y, or N2 sin theta will be responsible for taking it in the forward direction. So that will be A2 x. So यहाँ से हम equations लिख सकते हैं. N2 cos theta will balance out N1, so I can write in the vertical direction N1 will be equal to mg plus N2 cos theta, and N2 sin theta will be responsible for acceleration. So N2 sin theta will be equal to mass times acceleration of path. But यहाँ पे N2 is unknown. N2 is unknown. So यहाँ पे vertical equilibrium नहीं है. So we can write mg minus N2 cos theta. That will be responsible for small mass into A to y. And N2 sin theta. N2 sin theta will be responsible for capital mass into small m into A2 x. See, N2 sin theta is responsible for acceleration, horizontal acceleration for both of them. So this is the case. Now the difficulty, let us see what difficulty we are facing here. अगर मैंने N2 कैलकुलेट कर लिया, बस A1 और A2x पे रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? N2 sin theta के लिए दोनों इक्वल है. So यहाँ से this equation is 1, this equation is 2, then from 1 and 2 we have ma1 is equal to ma2x. So horizontal में there is this concept called center of mass. So उससे A1 A2 relate कर सकते हैं. So I can write A2x is capital M by small m into A1. So this is this. But
यहाँ से हम n2 फाइंड आउट नहीं कर सकते बिकॉज देयर आर 3 अननोन्स ना, 2 इक्वेशन है, 3 अननोन है, a2x भी अननोन है, a1 भी अननोन है, n2 भी अननोन. And while in this case we have this यहाँ पे n2 भी अननोन है, a2y भी अननोन. So this causes a problem कि अननोन्स हमारे पास 3-4 हैं, 4 हैं और इक्वेशन 3 ही है. Okay. So I don't want to just tell you the answer. We're going to analyze on how to solve the problem quickly in exam. Because exam में एक हमेशा नया क्वेश्चन आता है, JEE एडवांस में मोस्टली. I wanted to think on how to solve this. अच्छा, किसी ने स्यूडो फोर्स से ट्राई किया क्या इसको? Anyone? अगर मैं इस ब्लॉक पे बैठ के एफबीडी बनाऊं, यहाँ से बैठ के अगर एफबीडी बनाते हैं, so I am moving with acceleration a1, right? I am moving with acceleration a1. So let us see what happens then. So I am moving with acceleration a1 in the backward direction. तो अगर इस ब्लॉक पे फोर्सेस को देखें, so mg will be acting downward. सिर्फ इस ब्लॉक की बात कर रहे हैं. Normal force will be acting on this in the upward direction. So separate this a bit because we are drawing the FPD. और कौन सा फोर्स आएगा? ये दो फोर्सेस तो हैं, mg and 2. Can anybody tell me the pseudo force on this block? Anyone? The left side. Left side कितना लगेगा? MA2. 1. Sorry, A1. MA1. जो ऑब्जर्वर है उसका एक्सेलरेशन a1 है, तो पीछे के डायरेक्शन में एक pseudo force लगेगा ma1. एंड इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? तो डाउन साइड है तो राइट साइड में कह सकते हैं. हाँ, डाउन द इंक्लाइन लगेगा, डाउन द इंक्लाइन. बिकॉज मैं ऑब्जर्वर हूँ तो मुझे ये सिर्फ नीचे स्लाइड होता हुआ दिखाई देगा, तो इसका जो नेट एक्सेलरेशन है दैट इज इन दिस डायरेक्शन. Sir, दिस इज, लेट मी कॉल दिस एक्सेलरेशन एज a3. a3 को भी a2 से रिलेट करेंगे. इट इज नॉट वरी अबाउट इट. या सर ऑब्जर्वर है, उसके डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना? या ऑब्जर्वर इज ओके. या observer is going in the backward direction, so this will be going in the forward direction. That is right. So यहाँ पे ma1 forward direction में लगना चाहिए because he is moving backward, of course, and acceleration will be down the incline. So I can do two things. या तो मैं acceleration के along ही सारे component ले लूँ, या तो acceleration के along ही सारे component ले लूँ, या acceleration का ही component ले लूँ. So let us try both ways. So 3 forces हैं. इनका अगर मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कंपोनेंट लेता हूँ, सो दैट विल मीन कि मुझे सिर्फ n2 और एक्सेलरेशन का कंपोनेंट लेना पड़ेगा. बट अगर mg और ma1 दोनों कंपोनेंट लेते हैं तो आई एम ब्रेकिंग द कंपोनेंट्स इन डाउन द इंक्लाइन लाइक दिस. बट सी, इसको मैंने ब्रेक डाउन किया along the horizontal here, acceleration along the horizontal and vertical. So let us do that here also. So this angle is theta. This वाला, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा. So this one, this is theta, so this is 9, this is also theta, this is 90 minus theta, so ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा.
And if you want to talk about this angle is theta. So this angle is 90 minus theta, 90 minus theta. So this one is theta. This one is theta, this one is theta. So vertical में n2 cos theta आ जाएगा, horizontal में n2 sin theta आ जाएगा. And acceleration, here it is a3 cos theta, here it is a3 sin theta. मैंने a2 नहीं लिया, a3 लिया because a3 is with respect to this person. इसको कितना acceleration दिख रहा है. So now I can write this relation that mg minus n2 cos theta equals to a3 sin theta. And second equation, that ma1 plus n2 sin theta, that is equal to a3 cos theta. Now see, ये छोटे वाले block, छोटा वाला block downwards आ रहा है with acceleration a3 sin theta. a3 sin theta. So downward acceleration should remain the same in both the frames. Downward acceleration should remain the same in both the frames. Right? So a2y should be equal to this a3 sin theta. a2y should be equal to a3 sin theta. Even if I compare the equation, this equation, mg minus n2 cos theta, mg minus n2 cos theta is ma2y. यहाँ से भी देख सकते हैं mg minus n2 cos theta is a2y, ma2y, and mg minus n2 cos theta is a3 sin theta, ma3 sin theta. So we have got the value of a3 from here. a3 को a2 से relate कर सकते हैं. And one more thing, see, velocity of smaller block or acceleration of smaller block m with respect to person, let me call this as person, or with respect to bigger block, that will be equal to acceleration of smaller block with respect to ground minus acceleration of bigger mass with respect to ground. So ये horizontal direction की बात करते हैं सर. So acceleration of smaller mass with respect to bigger mass, that is what we are taking is a3 cos theta in the forward direction. So this is a3 cos theta. And acceleration of smaller mass with respect to ground in the horizontal direction, that was taken as a2x. This is a2x. And acceleration of bigger mass with respect to ground, that is minus a. So I can write a3 cos theta, that is equal to a2x plus a. So from this relation, I can eliminate a3 cos theta again. I should multiply this by small m. So this becomes ma1. This can be substituted here. So these are the same equations, but we are writing them from pseudo codes. We are writing them from pseudo codes. Okay, first note this down and make sure that you understand these steps. And now try to find the acceleration a1 and a2. So this is the first method. Try to find the value of a1, a2x, and a2y. We have noted this, and note this. See. Now the main difficulty is finding the value of n2.
And see, suppose if I draw this free body diagram again, I have this forces into mg in the vertically downward direction, and acceleration is down the incline. Acceleration is down the incline, that is a3, and we have a force that is equal to ma1 in the forward direction. So if you take the component along this direction, there is no acceleration here. And you will be able to find the value of n2. Try this. Now this angle is theta. This angle is theta. So इस direction में कोई भी acceleration नहीं है. So this is n2. So ma1's component इधर लेंगे. That will become ma1 sin theta. And mg component इधर लेंगे. So it will come as mg cos theta. So from here we get the relation, the missing link that we can use to solve the equation for n2. So यहाँ से लिख सकते हैं इस direction में कोई भी acceleration नहीं है when you are looking from the bigger block frame. So simply n2 plus ma1 sin theta, that is equal to mg cos theta. n2 plus ma1 sin theta is equal to mg cos theta. And this you can use to find the value of n2. And n2 पता चल गया, then you can find a1, a2, a3. Try solving this equations. So यहाँ से a1 आ गया, a2x आ गया. So a2x आ गया. And of course you have the normal force, यहाँ से a2y भी निकाल सकते हैं using this equation. So I have my n2 as ma1 by sin theta. I'll put it here. And a1 की value भी निकाल लो. a1 की value is this one. So just put it there. So I'll put a1 here. Sin theta cancel out both sides. M cancel. Then a2 I will come as g minus mg cos theta divided by m plus n sin square theta. अच्छा a2x a2y आ गया. Then acceleration a will be root over a2 will be over root over a2x square plus a2y by square. इसको और solve कर सकते हैं. Sin square theta minus cos theta. ठीक है, we can leave it like that. So हमारा a1 आ गया, a2y आ गया, a2y और a2x मिला के we can find out the value of a2. So like this we can solve. So numerical values दी होती है तो ये solve करना और easy होता. But the purpose of doing this was to teach you कि means sometimes you have to use both the equations. पहला in inertial frame and यहाँ से see non inertial frame में बस मुझे एक चीज चाहिए थी यहाँ से. This equation, ये वाला equation चाहिए था मुझे non inertial frames. बाकी ये वाला सारा portion useless था. This portion is not useful at all. Okay,
So in various cases, you will find that you have to try out different things. And the more difficult questions you try, the better you get at it. इसका कोई shortcut या solution नहीं है. So all the good rankers or the high performers, they practice these difficult questions by themselves. यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल दिया मैंने. Of course, एक क्वेश्चन करने में हमें almost 1 घंटा लगा. But here we are learning how to think about this big questions. Exam में maybe numerical values के terms में हो तो और कम time लगे. But this is the solution for it. Okay, note this down. And we're going to proceed with some more questions. Not like this. ये तो difficult question था, of course. Okay, anybody has got any confusion? So I would suggest that after the class, you will try this question once again. Note this down. It's highly possible कि हाँ पहली बार में question समझ में ना आए. But if it is clear कि FVD कैसे बनाया है, then you can solve the equations. And eventually, see in Newton's law, and even in rotational motion is considered as one of the difficult topics. Just wait, someone is on the door. I'll be back. Note it down. Yeah, if you note earlier, then note this part. But A1 is not equal to A2x. A1 और A2 में ये relation था. A2x is m by m A1. So A2x is equal to MA1 by M. So A2x will come out to be mg sine theta cos theta divided by m plus m sine squared theta. So this is A2x. And one more thing we have learned, this relative acceleration wala, A3 cos theta is the relative acceleration in the horizontal direction. Right? So relative acceleration A3 cos theta. So that is, if you want to find acceleration of block with respect to the inclined plane, acceleration of block that is smaller mass with respect to the inclined plane, that will be just A1 plus A2x in the horizontal direction, of course. That will be A1 plus A2x, or in दोनों को sum कर देंगे, so that will be the answer. That will be m plus m g sine theta cos theta divided by m plus m sine square theta. Right. Note this down. Okay, then let us move on to the next question. And here also, you don't need to use pseudo course, but there is some different type of question. And suppose we have the arrangement like this. And we have the first pulley, which is a fixed pulley. And fixed pulley means pulley ka acceleration nahi hoga. There's a rope going over it. Okay, so we have the first pulley, which is a fixed pulley. Fixed pulley move nahi kar sakta. So that's why it is called a fixed pulley. And fixed pulley pe first mass hai, call it mass m1. And we have the second pulley. Second pulley can be moved. So the rope is a single rope.
second pulley can move. You can imagine the motion. M1 नीचे जाएगा तो ये pulley ऊपर जाएगा. And second pulley से there is a second block attached. And mass of this second block is M2. So let us say कि M1 नीचे जा रहा है with acceleration A1 and M2 ऊपर जा रहा है with acceleration A2. You have to find the value of A1 and A2. Find A1 and A2. Of course, it is given that pulleys are massless and frictionless. Pulleys and rope are massless. There is no mass of pulley. And all surfaces are frictionless. This will be the given condition. जब तक हम friction पढ़ नहीं लेंगे, that will be the condition. All surfaces are frictionless. Find the value of acceleration of A1 and A2. See, rope different हो गया है. Single rope का acceleration same होता है. But यहाँ पे rope different हो गया है. So therefore, they will have a different acceleration. Try this. Draw the FPD and try to relate A1 and A2. Try to think कि अगर मैं इस मास M2 को इतना ऊपर ले जाता हूँ, सपोज इतने लेंथ से ऊपर ले जाता है, तो M1 कितना नीचे जाएगा. Try to relate it like this. सर रोप सेम है ना? ये वाला रोप सेम है, बट ये वाला डिफरेंट है. मतलब M2 पे जो अटैच्ड है, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं आएगा. ओके सर. अगर इसको मैं L2 मूव करता हूँ, तो सी ये वाला जो है ट्वाइस L2 मूव करेगा. इतना ऊपर जाने में डबल रोप नीचे जा रहा है. So think about how that will happen and find the relation between the acceleration. Can anybody tell me the relation between A1 and A2? Simple relation A1 or A2. Yeah. सर इक्वेशन ना A1 और A2 के बीच में. Yeah. सर M1G minus M2 into G plus A2 divided by 2 equals M1 A1. No. A1 A2 में क्या relation? See here, अगर मैं M2 को L2 डिस्टेंस से ऊपर ले जाता हूँ, तो ये डबल रोप का मींस ट्वाइस ऑफ L2 डिस्टेंस इस पोर्शन से कम होगा. दैट मींस ट्वाइस ऑफ L2 अगर इधर से कम हो रहा है, तो ट्वाइस L2 रोप का डिस्टेंस लेंथ इधर से बढ़ जाएगा. सो M1 का जो लेंथ चेंज हो रहा है, दैट इज इंक्रीजिंग बाय L1, और इधर वाला पोर्शन M2 ट्रैवल कर रहा है L2 से. सो आई कैन राइट दैट L1 इज ट्वाइस ऑफ L2. इसको डिफरेंशिएट किया तो आई विल गेट V1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V2. फिर से डिफरेंशिएट किया आई विल गेट A1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A2. सो M1 ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो है M2 वाले ब्लॉक से डबल होगा. इज दिस क्लियर? अगर ये L2 से ऊपर जाएगा, तो ये वाला ब्लॉक 2L2 से नीचे आएगा, तो डबल नीचे जा रहा है. So that means A1 is twice of A2. इसके बाद FBT बना के you can get the answer. Nirmal, is this clear? Yes sir. हाँ. ठीक है, तो आराम से फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगा इसका. ऊपर इधर टेंशन T लग रहा है, नीचे M1G लग रहा है, और एक्सेलरेशन इज A1, और M2 ब्लॉक पे नीचे M2G लग रहा है. ऊपर यहाँ पे डबल टेंशन लग रहा है, T and T. So I can write 2T. इधर भी T लगेगा, इधर भी T लगेगा, एंड ये ऊपर जा रहा है. सो दो इक्वेशन आ जाएंगे. That will be M1G minus
T equals to M1 A1 and 2T minus M2G, that is M2A. And here you know A1 is equal to twice of it. Use this relation also. So ये solve हो जाएगा. Put A2 equals to A1 is equal to 2A2. So this will come out to be M1 into 2A2. And then you can solve this. First equation, second equation. So first equation को 2 से multiply करके second equation में add कर सकते हैं. So find A1 and A2. Bharvi, tell me the value of A1. A2 का है अभी. Yeah, what is A2? G M1 minus M2 upon M2 plus 2 M1. टू M1 आ रहा है. सर मेरा 4m1 आ रहा है. 4M1 आना चाहिए because यहाँ पे twice से multiply हो रहा है equation. और यहाँ पे 2M2 आ रहा है क्या देर में? नो सर. 2M2 नहीं आ रहा. नहीं. Just M1 minus M2. See, इस equation को 2 से multiply करना है. So that will give me twice of M1G minus 2D equals to 4M1 A2. So 2M1 minus M2 आना चाहिए. And A1 आ जाएगा twice of this. So 2G 2M1 minus M2 divided by M2 plus 4M. These will be the answer. This is the arrangement, and your angle theta given है. This block has mass M1 and this block has mass M2. पुली ये वाला fixed है, ये वाला पुली बिल्कुल fixed है. Fixed है मतलब कि ऊपर नीचे move नहीं कर सकता ये. Of course it can rotate, but ये वाला पुली move कर सकता है. M1 नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, like that. So let us say कि इसका acceleration A2 है and this goes with acceleration A1. Find A1 and A2. सारा surface frictionless है, block and pulleys and rope are massless. Find A1 and A2. सबसे पहले A1 A2 को relate कर देना है, उसके बाद free body diagram बनाना है. Next ध्यान देना इसको हम कितना, अगर L1 move करते हैं तो ये कितना नीचे जाएगा. That way you have to think about it. Aditi, tell me the relation between A1 and A2. Sir, not done yet. I need to solve. Vaishnavi, can you tell me the relation between A1 and A2? A1 is equal to 2A2. I'm not able to hear you, Vaishnavi. I see your unmute, but your mic maybe is not working. A1 is equal to 2A2.
So like the previous question again, we can solve it like this. So if you move it, yeah, A1 is equal to twice of A2. Okay, so see here, if I move this forward by length L2, okay, तो यहाँ पे this length will be responsible, तो ये वाला आगे L2 move करेगा. Or suppose you can compare from here. If this is moving in the forward direction by L1, if this moves by L1 in the forward direction, and this moves by this will move by L1 by 2. So ये pulley, जब if this pulley is moving by L2 distance, if this pulley is moving by L2 distance, so this block is, let us say, moving by L1 distance. So it's the same way, just यहाँ पे related the मुझे दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा L2 distance. So then I can write L1 is equal to twice of L2. That will give me A1 is equal to twice of A2. Yeah, Vaishnavi, your answer is correct. Now you solve for A1 and A2. सर L1 equals to L2 नहीं समझा. See, if you move this pulley by L2, if you move this pulley by L2, तो pulley आगे move कर रहा है by L1 by L2 distance. So let us say pulley यहाँ पे था और यहाँ पे move कर गया. That means on this side we have added a length of L2. इस साइड L2 लेंथ बढ़ गया और इस साइड L2 लेंथ कम हो गया. Can I say that? जब ये ब्लॉक आगे मूव करेगा, so पुली जब L2 आगे मूव करेगा, तो इस साइड भी लेंथ, इस साइड की लेंथ L2 अगर कम हो रही है तो इस साइड L2 बढ़ जाएगा. So this block is basically moving by 2 L2 distance. Try to imagine it. This pulley is moving by L2 distance. So pulley move करेगा जब आगे by L2 distance, तो यहाँ पे L2 distance बढ़ेगा और यहाँ से L2 लेंथ शॉर्ट हो जाएगा. जब यहाँ से L2 लेंथ शॉर्ट हो जाएगा, यहाँ से L2 लेंथ बढ़ जाएगा, that means it has moved by distance to L2. Is that clear? हाँ सर समझा. Okay. See, for some students things might get difficult. तो इसमें टाइम लगाना है. You have to think about this situation. ये कैसे actually move कर रहा है. छोड़ नहीं देना, याद नहीं कर लेना कि L1 equals to L2 होता है. But actually think of ये कैसे move कर रहा हो. Okay, now find the value of A1 and A2.
Then what's the value of A1 or A2? सर A2 का फाइंड किया, Yeah, it was सर सिंप्लीफाई करना बाकी. okay. Sir, A2 is G sin theta into M2 minus 2M1 divided by 4M1 plus M2 sin theta. Sir, can you repeat? Sir, G sin theta into M2 minus 2M1. M2 minus 2M. I just wondered someone is on the group. I'll write on the equations first. So M2G minus T, that will be M2A2. अच्छा इसमें अगर मैं टेंशन T ले लेता हूँ तो यहाँ पे टेंशन 2T हो जाए. So here I should write 2T. और यहाँ पे हो जाएगा T minus M1 G sin theta, that should be equal to M1 A1. Okay, इसको सॉल्व करना है तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन विल ऐड देम अप. So that will give me M2 minus 2M1 sin theta, G कॉमन आ जाएगा and A1 A2 में रिलेशन है, A2 is equal to twice of A1. So this will become, टेंशन को कैंसिल आउट करना है तो इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया. टेंशन को कैंसिल करके एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना इज द इजीएस्ट मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड में बहुत लंबा हो जाता है एक्चुअली, सो आई प्रेफर दिस मेथड. सो A2 equals to 2, no, A1 equals to A1 equals to 2A2. तो ये आ जाएगा 4M1 प्लस M2. यहाँ से A2 आ जाएगा M2 minus 2M1 sin theta G divided by 4M1 plus M2. Or A1 equals to twice of A2, so that would be 2 M2 minus twice of M1 divided by 4M1 plus M2 into G. इससे का ये आंसर आया है क्या? हाँ See, सर. okay. See, elimination method use करना is much better than substitution. यहाँ पे टेंशन सीधे एलिमिनेट किया तो एक्सेलरेशन आ जाएगा. सर आप FAD बना के दिखाओ ना. या सो अगर एफईडी ड्रॉ करेंगे तो M2 पे फोर्स लग रहा है नीचे, दैट विल बी M2G. टेंशन हियर 2T एंड 2T यहाँ पे इसलिए लिख रहा है बिकॉज अगर पुली का एफईडी बनाएंगे तो अगर इस वाले रोप में टेंशन T ले रहे हैं तो ऊपर वाले रोप में ऑफ कोर्स टेंशन आएगा 2T एंड ये एक्सेलरेशन A2 होगा. यहाँ से पहला वाला रिलेशन आ जाएगा एंड एफईडी में mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल फोर्स इन दिस डायरेक्शन, टेंशन इन दिस डायरेक्शन और एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में हो रहा है विद A1. सो M1 का कंपोनेंट ले लेंगे, mg का कंपोनेंट ले लेंगे M1g का, दैट विल कम आउट एज, यहाँ पे आ जाएगा M1g cos थीटा एंड नो M1g sin थीटा बिकॉज दिस एंगल विल बी थीटा, है ना. यहाँ से ये वाला एंगल वर्टिकल वाला लेंगे, ये थीटा है 90 माइनस थीटा, तो ये वाला थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल थीटा है. सो दिस विल बी M1g cos थीटा. So normal force is equal to M1g cos theta.
और टेंशन की वजह से एक्सेलरेशन आएगा, टेंशन विल कॉज द एक्सेलरेशन, सो t minus m1 g sin theta is m1 e1. Is this clear? Yes. Okay, after this question, let us solve some more questions like this. These questions are from SC Verma, and पहला काम कर लिया, that is accelerations को relate कर लिया, then this becomes easier. You have to find acceleration of A and acceleration of B. That is the question. Acceleration of block A and acceleration of block B. But उससे पहले relate करना पड़ेगा कि दोनों में relation क्या है. Suppose ये 4 kg वाला block नीचे जा रहा है with acceleration A1 और 5 kg वाला ऊपर जा रहा है A2. Given A2, let's say AA, acceleration of A and acceleration of B. So पहला काम है acceleration of A और acceleration of B को relate करना. After, of course, this will go downwards, acceleration of B. This will go in the forward direction. In all three cases, पहला काम, first, don't make the activity and solve it. पहला काम, बस relate the accelerations. That is the main task. Here let us say this is, let us assume कि ये ऊपर जा रहा है and ये वाला नीचे जा रहा है. Relate the acceleration of A and acceleration. This question is from SC Verma only. That is question number 34 from your book. Okay, try this. Arjun, can you tell me the relation between acceleration of A and B in the first case? I can't hear you if you're saying something. सर आप बता सकते हो क्या? See, मैं इस वाले को नीचे ला रहा हूँ. Let us say इसको नीचे लेके आए by length of L1 और length of A. ये इतना नीचे आए. ये जब या तो दूसरे वाले को कंसिडर करता है. Let me take यहाँ से पुली को इतना ऊपर करते हैं. Call this length of B. तो सी पुली जब यहाँ पे आ जाएगा, पुली जब यहाँ पे आ जाएगा तो डबल लेंथ कम हो गया यहाँ से रोप का, है ना. पुली जब ऊपर आ जाएगा तो डबल लेंथ कम हो गया रोप का. तो डबल लेंथ कम हुआ मींस इधर से डबल लेंथ बढ़ जाएगी. तो ये वाला ब्लॉक जो है ट्वाइस ऑफ एल बी नीचे चला जाएगा. समझ में आया? हाँ सर. So twice of LB is equal to LA. दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो acceleration of A is twice of acceleration of B. Clear है? हाँ सर. Okay. कुशाग्र B वाले केस का बता सकते हो क्या acceleration में रिलेशन होगा? कैसे? सिंपली सोच रहे हैं, हल्का से नीचे कर दिया B को तो ये लेटर से लेंथ ऑफ B इतना नीचे गया है ना. ये ब्लॉक पूरा ही नीचे जाएगा ऑफ कोर्स, बट मुझे डबल लेंथ चाहिए इस रोप की, तो वो डबल लेंथ तो इधर से ही आएगा, राइट? यस. सो ये LB है. अगर LB लेंथ से नीचे आया तो यहाँ से LB, ये रो कितना एक्सटेंड हुआ? LB नीचे और LB ऊपर, लेफ्ट साइड और राइट साइड. सो मींस ये ब्लॉक 2LB आगे जाएगा. सो ट्वाइस ऑफ LB इज मोशन ऑफ लेंथ ऑफ A. ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ B है
LB is displacement of B and LA is displacement of A. तो क्या रिलेशन लिख सकते हैं एक्सेलरेशन का? सर This is equal to 2a. 2A, correct. Aditi, can you tell me the relation for C? Aditi, can you hear me? So yes. Yeah. So can you tell me the relation? So 1 minute still doing. Okay. Okay, let's solve it together. So what we are going to do, ये वाला ब्लॉक थोड़ा सा पुली को ऊपर मूव कर देते हैं by length B. पुली को ऊपर मूव किया तो B मूव करेगा by length of B. जब पुली को ऊपर मूव करेंगे तो इधर से लेंथ B कम होगा, इधर से लेंथ B कम होगा. तो ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला रो है, वो 2LB से नीचे जाएगा. हाँ. So 2LB is equal to displacement of A. हाँ. So यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं? Acceleration of A is equal to 2AB. 2AB. So ऐसा थिंक करना है, एक को हल्का सा मूव करें तो दूसरा कितना मूव हो रहा है. इसको हमने डायरेक्टली कैसे निकाली है? डिफरेंशिएट किया तो ये रिलेशन आता है twice of velocity of B is equal to velocity of A. फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन का रिलेशन आता है. ओके, इसके बाद क्या करना है? FBD ड्रॉ करना है एंड फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ A and B. वो मुश्किल काम नहीं है. Find acceleration of A and B. Draw the FBDs and find the acceleration of A and B. Bharvi, tell me the accelerations in this case, first case. Sir, acceleration of A 60 by 21 or acceleration of B 30 by 21. Thirty by 10 to 21, that's 10 by 3, no? Huh. Yeah. And this is 20. No, 10 by 7. No? 10 by 7. Yeah. 10 by 7 meter per second square. And this is 20 by 7 meter per second square. नमन, इतना आंसर आ रहा है? रिलेशन रखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. अच्छा, ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ. A1 is equals to 2A2. हाँ, वो तो आ रहे हैं. FBD बनाया तो इक्वेशन क्या क्या दिखा है? सर FBD बनाया तो 40 minus T is equals to 4A. 40 minus A1. T equals to 4A1. अच्छा, T इसमें टेंशन लिया क्या? हाँ सर, इसमें लिया है. ठीक है. 4A1, 4 acceleration of A. उसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या लिखा? सेकंड इक्वेशन लिखा है 2T minus 50. 2T minus 50 is equals to 5A2. 5A2. That is acceleration of B. फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करा. लिख सकते हैं 8AB लिख सकते हैं इसको. हाँ. फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 minus 80 2T equals to 8AB आ जाएगा. हाँ सर, ये आ गया था. ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 30 equals to 14AB, है ना? ऐड कर सर देंगे ये AB वाला नहीं आया. अच्छा, ये समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? 2T कैंसिल आउट हो जाए, इसीलिए ट्वाइस. सर वो तो हो गया था. हाँ, फिर AA की जगह AB पुट कर देना है तो AA हो जाता है ट्वाइस ऑफ AB. 4AA हो जाएगा 8 times AB.
ठीक है, हाँ सर। यहाँ से ये भी आ जाएगा 30/14 तो 15/7 आ रहा है। 15/7 सर 8 टूजा भी होगा ना? हाँ, यहाँ पे 16 आना चाहिए। So this will be 30/21. So 10/7. ये 10/7 होगा तो उसका तो बस डबल कर देंगे तो आ जाएगा 20/7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड और थर्ड वाला ऐसे सॉल्व करना है। तो शॉर्ट में सेकंड केस में कितना आ रहा है एक्सेलरेशन? शंक, कैन यू हियर मी? हाँ सर, मैं लिख रहा था। अच्छा, आ रहा है सेकंड वाले का आंसर? हाँ सर, निकाल रहा हूँ। निर्मित सेकंड वाला हो गया? हाँ सर। कितना आंसर आ रहा है? सर 100/13 इसका आ रहा है 100/30 एंड ए बी 5/13 50/30 हाफ होगा उसका। भारवी, ये आंसर करेक्ट है? हाँ इतना सर। ओके। अदिति, इतना आंसर आ रहा है? हाँ सर। Okay, solve the last one. Naman, what's the acceleration of A in the third case? 10/10 10/3 A1. 10/3 A1. Okay. और A2? सर A2 5/3. थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। Aditi, what is your answer? सर ए मुझे 60/9 आया और ए बी 30/9। 60/9 हो जाएगा 320/3 ना? So ये हो जाएगा 10/3. हाँ। This is the correct answer. अभी मुझे लगता है कहीं पे बीच में मिस्टेक कर दिया. So this will be the answer. अच्छा, in SC Verma, you have to try now all the questions. You'll be able to do all the questions now. And just be question of difficulty ho, that we can take it up. So Newton's law of motion, that is your chapter 5, that you have to complete all of the question of the exercises. कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं जिसमें सोचना पड़ेगा, सो टाइम लगाना है उसमें सॉल्व करने में. न्यूटन्स लॉ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसी का ही एक there is a part of this chapter that is known as friction, so that will be taking up in the next class. Acha, after this class you have to complete your daily practice test for today. Okay, topic kinematics ही रखा है. Next test का भी topic kinematics ही रहेगा. And you have to submit the test, do the test, complete the test, and then send the screenshot. Send the screenshot of the marks that you have got. Everyone had to do that. ठीक है, that would be all for today. किसी को डाउट है तो you can ask the question. Next class से फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे और न्यूटन्स लॉ के सारे क्वेश्चंस by next week you have to submit. So अभी से करना स्टार्ट कर देना है. After the class you have to send with a screenshot of the daily practice test. Again 10 questions है,
7 ऑब्जेक्टिव और 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें से 3 ही अटेम्प्ट करना है। ऑलराइट देन दैट विल बी इट फॉर टुडे।